Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 20th December 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज हम डेली न्यूज एनालिसिस में ये तीन आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है गेलेफ्यू मेगा सिटी प्रोजेक्ट, दूसरा है कोविड वेरिएंट JN1 एंड थर्ड जो है इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशंस टू द आर्कटिक। इंडिया की पहली ये विंटर एक्सपेडिशन है आर्कटिक में। तो समझते हैं न्यूज इन डिटेल। सबसे पहला जो न्यूज है गेलेफी मेगा सिटी प्रोजेक्ट। रिसेंटली दिस प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड बाय किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुक ड्यूरिंग द 116th नेशनल डे एड्रेस एट चांगली माथंग स्टेडियम एट थिम्फू ऑन December 17 एंड इन दिस प्रोजेक्ट बेसिकली द लोकेशन ये होगा कि ये गेलेफू रीजन सरपांग डिस्ट्रिक्ट है भूटान में, नियर द बॉर्डर विथ असम and Assam, India, and this project targets act as an economic corridor connecting South Asia with Southeast Asia via India's northeastern states to countries like Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia and Singapore। तो बेसिकली एक तरह का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा और इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया या एक्टिंग ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट से इट इज बेसिकली एम्ड टू बी एन इकोनॉमिक एंड सोशल हब on Bhutan's southern border, which is designed to benefit the entire South Asian region and address youth migration by providing local employment and skill opportunities। तो जितने भी यूथ जो माइग्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से उनका माइग्रेशन रुकेगा एंड ये जियो पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है because it is a strategic initiative for regional integration, enhancing Bhutan's connectivity with South and Southeast Asia। Focus होगा on renewable energy resources, aligning with Bhutan's commitment to environmental sustainability। तो भूटान की जो कमिटमेंट है इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड उस प्रोजेक्ट को बूस्ट करेगा। Next, infrastructural development. It is in the plans for Bhutan's second international airport capable of landing larger planes than Paro airport। तो पारो का जो एयरपोर्ट है वो छोटा है, बड़े बड़े प्लेन लैंड नहीं हो सकते, इसलिए भूटान के लिए सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही है। एंड देयर इज ए प्रपोज्ड रेल लिंक बिटवीन कोकराझार इन असम इंडिया एंड गेलेफू भूटान। इससे हमारे इनहेंस रोड कनेक्टिविटी होगा फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सेकंड जो है इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फोकस होगा। इट एम्फसाइजेस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी and it also aims to attract quality investment from internationally screened companies that align with Bhutanese values। So this is the provisions regarding the infrastructure development project। चलिए अपने अगली न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है कोविड वेरिएंट JN1 एंड इसके फर्स्ट केस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में। कोविड फिर से कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस उसके केसेस छोटे मोटे निकल रहे हैं एंड इस बार जो वेरिएंट है वो है JN1 वेरिएंट। Following the detections of the JN1 COVID-19 variant, Karnataka announced that senior citizens are advised to wear mask and the JN1 variant was identified in Kerala and is travelers from the Singapore to Tamil Nadu with additional cases found in Goa। तो गोवा में भी additional cases मिल रहे हैं JN1 के। JN1 जो वेरिएंट है इट इज अ सब वेरिएंट ऑफ BA2.86 also known as Pyrola, first detected in United States in September and globally as early as January। ठीक है। While JN1 has only one additional mutant on the spike protein compared to Pyrola, its higher number of spike protein mutations has drawn attentions of researchers। तो इसके जो mutations जो बहुत ज़्यादा हैं compared to other variants and potential impact of JN1 is basically currently there is no evidence suggesting that JN1 causes more severe symptoms or spread faster than the other circulating variants। So both Pyrola and JN1 have been effectively neutralized by serum from infected and vaccinated individuals according to the WHO Technical Advisory Group on COVID-19 vaccine compositions। तो ये लगभग हेल्प कर रहा है that is to that potentially impact JN1 variant। नेक्स्ट अगर थोड़ा और समझा जाए तो बेसिकली द JN1 वेरिएंट बीइंग डिटेक्टेड एंड ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। गोवा में लगभग 15 केसेस डिटेक्ट हुए हैं।
सो दैट इज रिगार्डिंग द JN1 वेरिएंट। ये बेसिकली ऐसे तो सारे यूथ्स सारे लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है, बट मोस्टली एज ओल्ड में ज़्यादा केसेस हो रही है। चलिए अपने अगले न्यूज़ से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज़ है वो है इंडिया लॉन्चेस ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट आर्कटिक विंटर एक्सपीडिशंस फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्या है समझते हैं थोड़ा सा। न्यूज़ ये है कि इंडिया embarks on its first ever winter expedition to the Arctic starting this week, and with this initiative, India's Himadri become the fourth research station in the Arctic to be manned year round. And in this project, a team of our four scientists, funded by the Union Ministry of Earth Science, will conduct the expedition from December 19, 2023 to January 15, 2024. And the expedition will focus on atmospheric science, astronomy, astrophysics, climate studies, and more. And Himadri, जो हमारा स्टेशन है, the team will be based at the Himadri, India's sole research station in New Ellesund, located 1200 kilometers from the northern pole. And Himadri has been equipped for polar night observations with support from Norwegian agencies. तो Norwegian agencies हमें इसमें support कर रही है। नेक्स्ट आर्कटिक रीजन एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बोला जाए तो आर्कटिक सर्कल्स लाइज नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड दैट इज 66 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ encompassing the Arctic oceans, and scientific studies highlights the Arctic influence on global sea level and atmospheric circulations due to ice melt. The Arctic region has experienced an average temperature rise of 4 degrees Celsius over the past centuries, whereas the Arctic sea ice extent is decreasing at a rate of 13% per decade, potentially leading to an ice-free Arctic Ocean by the summer of 2040. तो बेसिकली ये कुछ प्रोविजंस है और आर्कटिक आने वाले टाइम में कहा यह जा रहा है कि 2014 में लगभग बहुत सारे पोटेंशियली ये आइस फ्री हो सकता है आर्कटिक ओशंस, एंड इट विल कॉज मेजर डैमेजेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द प्रोविजंस ऑफ आर्कटिक रीजन एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. And please do follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. As well as we have also started our UPSC and other state PCS foundation batches, both online and offline format. So if you are preparing for any civil services examinations, either UPSC or any state PCS, you can call in this number for free demo classes. As well as you can also visit our these centers at different cities. So that's all for today, and please do take care of yourself.